Yes. Am I audible to you? Yes. Screen is here. Screen is here. Yes, sir. Yes. Okay. Just what happens? Yes, your voice is clear. Okay. Exercise 6.4, question number 2. Exercise 6.4, question number 2. Find the number of digits in the square root of each of the following number without any calculation. आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने ये बताना है कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएगी. फर्स्ट 64. ओके, तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर रूट करने के बाद जो डिजिट्स आएगी वो कितनी आएगी. पेयरिंग कीजिए इसकी लास्ट 2 डिजिट से, ओनली 1 पेयरिंग. ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिजिट. यस. Your voice is not clear. Sumit Singh, your voice is not clear. No, your voice is not clear. Kushi Kumari, try to speak. Yes, sir. Kushi Kumari, voice is clear. Sumit Singh, your voice is not clear. Kushi Kumari, are you able to understand what Sumit Singh is saying? No, sir, there is a very background noise in your side. Okay. Yes. Yes. 64. How many digits will be in square root of 64? Here, listen to me. Here is how many digits? Only one pairing is there. Only one bar is there. So there will be a 1 digits. Only 1 digits. Okay. Find the number of digits in the square root. यहाँ पे लिखिए in square root of 64. In square root of 64, 1 digits will be there. How? Find the number of digits in the square root of each of the following number. ठीक ना? Number of digits in square root of 64, there will be 1 digits. There will be 1 digits. Okay. अगर हम 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या है, सिंगल डिजिट मिलेगी. ओके, अब देखिए आप इन 144 pairing from the last digits, there will be 2 pairing. There will be 2 pairing. So in square root of 144, here are 2 pairing. So there will be 2 digits. Okay. How many pairing? Yes. So there will be. So in square root, square root of 144, there will be 2 digits. There will be 2 digits. Okay. Okay, sir. Any doubt, any problems? And your last one is fifth part. Fifth part is fifth part. 3,90,625. Make the pairing 1, 2 and 3. There will be 3 digits.
there will be 3 digits. In square root of 3,90,625, there will be 3 digits. There will be 3 digits. Okay, there will be 3 digits. How many digits? 3 digits. Okay. 3 digits. Okay. Any doubt, any problems? No, sir. Do it fast. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Question number 3 is scroll little bit. Yes. Do it. Have you done? Yes, sir. Yes. Now, question number 3. Question number 3. Find the square root of the following decimal numbers. Decimal numbers. Question number 3. First of all, 2.56. Square root. Yes. 2.56. Make the pairing. After decimal will be pairing, that is pairing, and that is single pairing. Okay? Yes, sir. Okay, any doubt? No, sir. Now, 1 manja 1. 1. Yes. Now remaining is 1 and pairing is 56. 1 2s are 2. Now count the table of 2 such that this is not more than 15. Six is 36. 3 carry. 6 is 12. 12 or 3 15. Now it becomes 1.6. 1.6. So 2.6 square root will be 1.6. Any doubt, any problems? बस सेम है, इसमें डेसिमल आ रहा है, ठीक है ना? No, sir. Yes. Now your next is 42.25. Fourth point. 42.25. Yes. Fourth point. 42.25. Square root of 42.25. Yes, how can you do? Sir, first we'll pair 42 and 25. Yes. After decimal, then 2 digits, 25, and that is 42. Count the table, count the perfect square number. 6 is a 36. Very good. Sir, 6. Now your remainder will be 6. Next pairing is your 625, and that is decimal. Decimal will be there. 6 is a 12. Count the table of 12 such that this is not more than 62.
12 5 या 16, वेरी गुड। अगर हम यहाँ पे 5 देखते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 5 5 से 25, ओके। 2 कैरी 12 5 से 60 60 एंड 2 62, ओके, दैट इज 6.5। 42. Now 42.25 square root is 6.5, okay? Yes, sir. Wait Yes, fast, sir. wait fast. Sir, done. Okay, Done, sir. okay, very good. Sir. Yes. Question number 4, first one. Okay. Now 402. 402 is not a perfect square number. Which number we will subtract from 402 so that it becomes a perfect square number? Okay. First of all, find out the square root by long division method. Okay. 2 to the 4. 2 to the 4. Now 0 0 2. Now 2 to the 4. Okay. 2 to the 4. Now here is 2. Here is 40 41 42. So it will become greater than this. So it is not divided. So there will be 0. Okay. There will be 0. And your remainder is 2. Remainder is 2. अगर इसमें से 402 में से अगर 2 सबट्रैक्ट कर देते हैं तो जो नंबर आएगा that will be a perfect square number. Okay. Find the list number which must be subtracted. So list number क्या यहाँ पे 2 है. List number will be 2. List number that is subtracted. List number which is subtracted. क्या है? सही मेरे को. Which is subtracted. 2. Which is subtracted from 402 is, that is 2. Okay. List number which is subtracted from 402 is 402 to make it perfect square number. Okay, sorry. अभी लिखिए जो रिमाइंडर आएगा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. सब्ट्रैक्टेड में जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो आंसर आएगा इसका. ओके. हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना है? 2 तो आया है यहाँ पे है भाई. आफ्टर सॉल्विंग व्हाट इज योर रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 2. यहाँ पे क्या बचा? 2 तो बचना है. इसको तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे. यस मिसिंग. एनी डाउट? ओके. यस yes. List number which is subtracted from 402 to make it perfect square. Which number? That is 2. Okay. अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट? Also find the square root of perfect square number. ठीक ना? Yes. Square root of perfect square number. Square root of your perfect square number will be, now ऐसे लिखो यहाँ पे, your perfect square number will be, please tell me. 400. Perfect square number will be, that is 402 minus 2, it becomes 400. And perfect square of 400 will be, what is? That is 20. यहाँ पे 20 आ रहा है ना? यहाँ पे देखिए 20 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 आंसर है. Any doubt, any problems?
sir. Okay, now your next is third part, 3250. Have you done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Question number 4, third part. That is your 3250. 3250. Okay. Pairing from the last. Now it becomes 5 5 are 25. Okay. Now what is remainder? 750. 750. Sir, 750. 7 is remainder, next pairing is 50. Okay. 5 to the 10. Count the table of 10 such that this is not more than 75. Sir, 7. 7. 7 से multiply करें, 7 7 का 49 and this is 7. Remainder is 1. So we'll subtract 1 from the given number to make it perfect square. Okay. To make it perfect square. Perfect square number. The smallest number which is subtracted. क्या होती है? 1. 1. Okay. Yes, required here is 7. Okay, here is 7. Required perfect square number will be required perfect square number will be required perfect square number. Yes. 3250 minus 1 3249. 3249. Your remainder is 1. So we will subtract 1 from the given number y to make it perfect square number. इसको perfect square number बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके. सो 3000. Yes. 3249 is your perfect square number. Any doubt, any problems? No, sir. संस्कृति, क्षितिज कुमार सिंह, प्रतीक्षा, सुमित सिंह, खुशी कुमारी, रिसु, have you any doubt, any problems? No, sir. Okay. Yes. Okay. Yes. Square root of now. Square root of square root of 3249 is yes. 1 second. Square root of 3249. What is square root? 57. It is your 57. 57. Yes. 57. Do it fast. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Question number 4. Fifth part. Yes. 4000. As you know that 4000 is not a perfect square number. Which smallest number is subtracted from 4000 to make it perfect square number? How can you do it? First of all, we will
divide it by, we will find out the square root by long division method and we will check what is your remainder. Pairing from last pairing from the last digit, that is 00 and 40. Okay, now 6 is the 36 and 7 7 is the 49. 6 is the 96. Your remainder is 4, sir. 4. Now 6 to the 12. Count the table of 12 such that this is not more than 40. Sir, 3. 12 is the 36. Okay. 5th is the 9 and 12 is the 36. Yes. What is now? What is left out? Remainder is 10 minus 9 1 and 9 minus 3 that 31. Okay. 31. 31. To make it perfect square number, we will subtract 31 from the given number. Okay. To make it perfect square number. Perfect square number. To make it perfect square number, 31 is subtracted. 31 is subtracted from 4000. Now to make it perfect square number, 31 is subtracted from 4000. Okay. So required perfect square number. Required perfect square number is 4000 minus 31. Okay. Now it becomes 9 and that is 6. That is 9 and 3. Nine minus 3 6. That is 9 and 3. Okay. Ain't not any problems? No, sir. Okay. Okay. Now square root of 3969. That is 63. 63. Okay, 63. Ain't not any problems? No, sir. Okay, do it fast. Yes. Question number 5th. Find the list number which must be added. Find the list number which must be added to each of the following number so as to get a perfect square number. That is 525. 525 में क्या ऐड करें? अब ऐड करना है इसमें, सब्ट्रैक्ट नहीं करना आपने कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए. 525 is not a perfect square number. Which number must be added to 525 to make it a perfect square number? Okay? Yes. Now 525 pairing from the end, that is 25 plus 5. Okay? Now 2 to the 4, 125. 2 to the 4. Now count the table of 4 such that which should be not more than 12. 4 to the 8. Yes. 2 to the 4. 2 4 the 8. If I will take 3, then it becomes, this is a 9 and that is 12. 129. Yes, which is more than
125, so will not take it. Okay, yes. Now remainder is your 1 and that is 414. Okay, yes. Now that is 22. Listen to me. अब यहाँ पे क्या है, एडिड का क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्टेड नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड होता तो क्या करते, 41 सब्ट्रैक्ट कर देते, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एडिड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियरली यू ऑब्जर्व दैट। देखिए यहाँ पे क्लियरली वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, that 22 स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 22, ठीक है, क्या है 22 स्क्वायर इज जस्ट लेस देन, इससे लेस देन है 525 एंड दैट इज लेस देन 22 प्लस 1 23। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे एडिट के लिए, क्या किया हमने, जो हमारे पास परसेंट में जो नंबर आया 22 स्क्वायर लेस देन 525, सॉरी 25 है, दैट इज 525 which is less than 23 स्क्वायर। 23 कहाँ से आया, 22 प्लस 1 23। किसी को डाउट यहाँ तक? भाई उस एडिड जो है उसका डिफरेंट मेथड है, सब्ट्रैक्टेड में लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो आपके पास रिमाइंडर आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं जो एडिड है उसमें क्या करते हैं, जो क्वोशेंट में जो नंबर आता है, ठीक है, जैसे 22 है, 22 स्क्वायर इज लेस देन 525, 22 प्लस 1 23, 23 स्क्वायर से लेस देन। ओके, यस। अब यहाँ पे 23 जो स्क्वायर है, 23 जो है 23 स्क्वायर कितना होता है, बट इज 23 स्क्वायर required smallest number, yes, required smallest number that is added to make it perfect square number, देखिए यहाँ पे 23 स्क्वायर माइनस 525, सॉरी 25, 23 स्क्वायर। अब यहाँ पे 23 स्क्वायर है, 23 स्क्वायर में से 525 माइनस करेंगे, दैट इज 529 माइनस 525, दैट इज 4। क्या करेंगे, 4। ओके, यस। कोई डाउट इसमें यहाँ पर? What happens? 525। ओके, यस। नाउ विच इज एडिड, हमने क्या ऐड किया इसमें, 525 में क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। अगर 525 में 4 ऐड करेंगे दैट विल बिकम 529 एंड 529 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसका है, 23 का है। समझ में आया? Okay. Yes. Now that is 4. Required perfect square number. Required
required perfect square number that is 525 plus 4 it becomes 529 and square root of 529 that is 22. 22. Yes. What must be added? अगर यहाँ पे ऐड है तो उसको सब जैसे यहाँ तक हमने सेम किया था किसमें सबट्रैक्टेड में और यहाँ पे एडेड में सेम करें यहाँ तक सेम ओके उसके बाद क्या करना है यहाँ पे 22 स्क्वायर इज लेस देन 525 एंड 22 प्लस 1 23 स्क्वायर ओके उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 23 के स्क्वायर में से ये मदद कर देंगे 525 एंड स्क्वायर ऑफ 23 इज 529 and 529 minus 525 that is 4 we will add to 525 to make it a perfect square number okay now 529 square root will be 23 इसको ट्राई करना अगर कोई प्रॉब्लम है कल डिस्कस करेंगे इसको ओके कुछ समझ में आया इसमें Okay, sir. कुछ समझ में आया Yes, sir. अगर समझ में नहीं आया तो कल इसको डिस्कस करते हैं दोबारा एक बार क्योंकि टाइम हो चुका है अभी ठीक है Yes, sir. Okay, sir. ओके Thank you, sir. ओके Yes, sir. ओके सुमित सिंह एनी डाउट एनी प्रॉब्लम Thank you, sir. सुमित सिंह Thank you, sir. एनी डाउट ओके